आज हमारे पास एक Redmi Note 5 का फ़ोन आया हुआ है, जिसका देख सकते हैं कि टच ग्लास पूरी तरीके से ब्रोकन हो चुका है और हमारा एलसीडी में हल्का हल्का सा काला काला सा दाग है। तो आज इसे हम रिप्लेस करेंगे और देखेंगे कि काला दाग हमारा थोड़ा बढ़ भी सकता है। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं।